Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to a Career 24/7 video. PD10, everyone. Use code PD10. Today's video we're going to be watching is PM Modi destroys Pakistani propaganda. India invited to the G7 summit. Now, I've seen all over Twitter in particular, people going on and on and on about Modi not being invited to Canada, or Canada like barring him from entry and stuff like that. Well, guess what? Modi popped up and said, "Hey, guess what? We're going! Yay! We're going to Canada." So let's dig a little deeper into this. The link to this video will be in the description down below, so please go and check it out. Also, if you have any other recommendations here for any particular video you want me to react to, let me know. I'll add it to the list. I will say the list is very, very, very deep. The list is a deep one, but I will nonetheless add it to the list. All right, here's the video. Prime Minister Modi destroys Pakistani propaganda. Let's get into it, guys. Again, नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा टूट चुका है। 4 दिन पहले ना पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने ये Modi not invited to G7 summit in Canada. Modi not invited. Who is this at the top? The Express Tribune. Oh, literally .pk, .pakistan. That's funny. Canada's claim of Indian role in killing pro-Khalistan leader in 2023 has worsened tensions between two countries. This is crazy because this Khalistani leader that was life ended. Can I say? I already said killed. This Khalistani whatever leader was killed in Canada, but it turned out it was like some rival gang in Canada, some rival gang member. But there was all this propaganda on the internet, like it was that India sent an assassin to do it, right? खबर छापनी स्टार्ट कर दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट जो हो रहा है इस बार कनाडा में, इसके लिए इनवाइट ही नहीं किया गया। इस पर आप देखोगे पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। फिर इनके जो राइटर्स हैं इन्होंने और जगह इन्फ्लुएंस करके इवन अमेरिका Congress slammed government over India not being invited to G7. Congress did? Why? For the first time in 6 years, Vishwa Guru will not be in attendance at Canada Summit. Whatever spin may be given, the fact remains that this is yet another big diplomatic bungle. What? Why would Congress be so against this? Why would Congress celebrate this? Is what I should be saying here. Weird. Bloomberg, of course, Bloomberg. मीडिया प्राइमरली ब्लूमबर्ग मैं हमेशा कहूंगा जो एक एंटी इंडिया न्यूज पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करेगा ना। Bloomberg was also the one that led on the military commander. I forget his name, but the one that had the interview that had the leading questions to lead to him saying that the Indian jets were downed. That was Bloomberg as well. सबसे पहले ब्लूमबर्ग पकड़ता है इसको। मुझे आज तक समझ नहीं आएगा कि ब्लूमबर्ग को हमारे सीडीएस साहब ने क्यों इंटरव्यू दिया था, बट ब्लूमबर्ग ने भी सेम आर्टिकल छाप दिया। और इंटरेस्टिंगली जब ब्लूमबर्ग का भी इस पे आर्टिकल आया, कई लोगों ने मुझे बोला कि इंडिया को G7 समिट में इनवाइट नहीं किया जा रहा, मैं इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि ये अभी कंफर्म नहीं है, इस पर न्यूज़ आ रही है, बट जब तक कोई चीज़ कंफर्म होती नहीं है मैं उस पर यूजुअली वीडियो बनाता नहीं हूँ। और इसीलिए बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पता है एक बार को ये वीडियो लेट बनाएगा, बट जो एक्चुअल न्यूज़ होगी, जो एक्चुअल स्टोरी होगी विद एविडेंस, वो फाइनली हमको पता लगेगी। तो पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, अमेरिकन मीडिया ने पकड़ लिया इसको, इवन इंडिया में भी कई यूट्यूबर, कई इन्फ्लुएंसर, सब लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जी भारत कहेगा विश्व गुरु। और इंडिया की पॉलिटिक्स में भी ये एक पार्ट बन गया कि जी Which YouTuber was saying this? Which YouTuber was saying that he wasn't being invited? Because there's no confirmation for anything. Which one was saying it? I have an idea.
I'm not going to say his name, but I have an idea. इस बार भारत को G7 मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया। ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Yeah, this is it right here. Yeah, he when I saw this tweet when it was like 3 minutes old. It was just a couple minutes old, and I posted it in my Discord, and yeah, it's he, the world is so weird. The world is so weird. रिसेंटली ट्वीट करी और ये कहा कि ग्लैड टू रिसीव ए कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जैसे आप लोग जानते हैं नए प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। इस वक्त कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा ने इनको कॉल किया। पीएम मोदी ने इनको कांग्रेचुलेट किया है ऑन हिज रीसेंट इलेक्शन विक्ट्री और इनको थैंक किया है कि इन्होंने इनवाइट किया है भारत को टू द G7 समिट। आगे ये भी कहते हैं as vibrant democracies bound by deep people to people ties, India and Canada will work with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meeting at the summit. तो अब भारत की पार्टिसिपेशन यहाँ पे one tweet, and he just destroys all these news articles that were going after him. I guess he destroys the Congress party as well that was like posting. I was gonna say posting slander against, but I guess it's not necessarily slander, just disinformation. All these people posting disinformation. It's crazy. It's really, really crazy. कन्फर्म हो चुकी है और इस बार का G7 समिट देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इमेजिन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा पहुंचते ही इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इंडिया कनाडा रिलेशंस कहां पर खड़े हैं, क्या कनाडा भारत के समर्थन में खड़ा है या नहीं खड़ा। बहुत से सवाल यहां पर पूछे जाएंगे और देखना होगा। We know Mark Carney is the same political party as Justin Trudeau, so we know his stance on the Khalistani people or the Khalistani movement. We know his stance on it. I don't think anything's going to change. I think there's going to be strong. This Khalistani movement will stay strong in Canada. क्या कनाडा अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को पीछे रखकर G7 की यूनिटी के बारे में सोचता है या नहीं सोचता? आई थिंक कनाडा यहाँ पर कुछ खराब हरकत नहीं करेगा जिससे G7 की इंपॉर्टेंस कम हो, क्योंकि G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ग्रुप है, ना सिर्फ कनाडा के पर्सपेक्टिव से, यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी। और यहाँ पे ये सातों देश आपको दिखेंगे जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज होते अगर भारत और चीन। Oh man, this is an interesting lineup. This is a very interesting lineup. Like politically, governmentally wise, it's a very interesting lineup. What I would say, like this tribe probably leans a little bit more conservative, right? A little bit more right. These are definitely far left countries, except for UK. The UK is turning into the caliphate. But like they're kind of riding the toe. They're kind of riding the line on some of their stances. But yeah, especially like the UK. France, Germany, Canada, they're like super far left. को दिखेंगे जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज होते अगर भारत और चीन एग्जिस्ट ना करते तो बिल्कुल ये टॉप 7 पे होते। फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये सब मेंबर कंट्रीज है G7 की। और आप अगर लिस्ट देखोगे कंट्रीज की, द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द United States, China, Germany, India, Japan, United Kingdom. United Kingdom's the 6th, probably because of all the territory and the old wealth that they have, right? Brazil, number 10, very nice. I love Brazil. Oh yeah, look, my camera can actually show the Brazilian flag. I got a new flag, guys. I got the El Salvador flag. I love El Salvador. Bukele should be the world dictator. I'm not even memeing. I'm not even joking. I think Bukele should rule the world. Russia's 11, huh? South Korea's 13. Actually, I have a South Korean and a Japanese flag as well. All the countries that I love are the wealthy countries. वर्ल्ड रिगार्डिंग नॉमिनल जीडीपी, तो उसमें भारत और चाइना इन दोनों को छोड़ के आप अगर देखोगे तो ये सभी कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगेन देखिए प्रॉब्लम G7 के साथ यही है, लोग लंबे समय से यही कह रहे हैं
कि G7 इतना रेलेवेंट रहा नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएसए को और भारत अभी भी G7 का परमानेंट मेंबर What? है। China will overtake? When is the estimated time frame of China overtaking the US? There's nothing on here that would give that opinion. है नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ये जो इनवाइट आया है ना कनाडा का, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये एहसान कर रहे हैं हम लोगों को बुलाकर। G7 नीड्स इंडिया टू स्टे रेलेवेंट, नहीं तो अगर किसी ग्लोबल ग्रुप में इंडिया या चाइना भी नहीं है, हाउ कैन यू टेक दैट ग्रुप सीरियसली? क्योंकि आप अगर G7 को कंपेयर करोगे ब्रिक्स के साथ, इंडिया एक A comparison, total share of global GDP, BRICS versus G7. Wow. So China makes up 19% of the wealth in BRICS. India makes up 7%. And then we got South Africa, 0.55. UAE? Oh, huh? Only 0.5. Ethiopia is Ethiopia is really just like, hey guy, I need a bum a ride. Let me hop on. UAE, huh? I guess the wealth is more like personal wealth rather than the actual. I don't know. परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स का, इंडिया मेंबर नहीं है G7 का। हमको एज ए स्पेशल गेस्ट हर साल इनवाइट किया जा रहा है लगातार 6-7 साल से। इस बार 7वां साल होगा जब लगातार भारत को इनवाइट किया जाएगा G7 समिट में। नाउ नोट करने वाली बात यह है, ऑलरेडी अगर हम टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी देखें तो ब्रिक्स देशों के पास 35% से भी ऊपर है और G7 अभी भी 30% से कम चल रहा है। तो आप इमेजिन करिए अगर भारत को ये एज ए गेस्ट भी इनवाइट नहीं करेंगे ना, तो G7 बहुत ही ज्यादा एक कमजोर ग्रुप दिखेगा कंपेयर टू ब्रिक्स। और मुझे आज भी याद है जब एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने भारत के विदेश मंत्री से पूछा था कि आपने ब्रिक्स बनाया क्यों, व्हाई डिड इंडिया जॉइन ब्रिक्स, ब्रिक्स की जरूरत क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों ने G7 बना रखा था और G7 में हमारी एंट्री हो। Yeah, like, I mean, there's no problem with people forming like financial alliances. That's perfectly fine. Like anybody that would be against it is kind of crazy, right? Like I don't like several of the countries in BRICS, but you know what? I'm not against them forming BRICS. I mean, I absolutely despise the CCP in China, right? I think the government in South Africa is also a huge joke. I don't particularly like Iran either, but like, I mean, if they want to form this, you know, then sure, by all means, go ahead and do it. होती नहीं थी तो हमको ब्रिक्स बनाना पड़ा। और यहाँ पे जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली इस वीडियो में बता दिया था, अगर ब्रिक्स ना होता ना तो तुम G7 में हमको एज ए गेस्ट भी इनवाइट ना करते। Do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know, so we Makes decided, sense. okay, you know, we are also, you know, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own. और अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह, इस बार का जो G7 समिट होगा ना, यहाँ पे हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म हुआ नहीं है, बहुत से सवाल पूछे जाएंगे मीडिया द्वारा। आज के समय हम देख रहे हैं कि भारत में बन रही है मीम्स कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो झगड़ा हो गया है ना, पीएम मोदी को जाकर अनाउंस करना चाहिए कि मैं सीज फायर अनाउंस करवा रहा हूं दोनों के बीच में। ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मीम, मजाक यहाँ पे चल रहा है। But I mean, I've even reposted some of these memes on the channel. It's a funny meme. It's a very funny topical geopolitical meme. It's very funny. बट डेफिनेटली जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे, पूछा जाएगा कि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस क्यों कर दिया खुद अपनी तरफ से, क्या। And again, I don't even know why
I mean, we know why. Trump wants credit for it so he can get the Nobel Peace Prize, right? But like, he didn't have anything to do with any talks. He didn't talk to either country, and yet he came out and said that, you know, he brokered a ceasefire with trade. He stopped a nuclear war with trade. Like, come on, man. It was Marco Rubio and JD Vance were the two that actually talked to people. He didn't have any communications with it. ट्रम्प का रोल था, ट्रम्प का रोल कितना था, फिर पाकिस्तान से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे और ऑब्वियसली एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आएगा कि G7 कंट्रीज मिलकर Are we still under? Okay, so there's two. I don't even want to say conspiracy theories. There's two theories. One is that there was nuclear leakage or nuclear facility was attacked at Karina Hill, and another was that there was U.S. soldiers at the Nurkan Air Base. This Nurkan Air Base one, I think that one is a little bit harder to see being the case. Yes, there was U.S. operations at that base from 2001 to an unspecified date, but again, if U.S. soldiers died or if U.S. assets were hit, Trump would 100%. We know Trump. You guys know Trump. Trump would 100% say something about it. 100%. He can't keep his mouth shut. Neither can Elon Musk. That's why they work so well together. Yeah, I honestly, I could see that the U.S. would have pulled out of that Nurkan Air Base when Biden pulled the U.S. out of Afghanistan. What was it, 2 years ago? I don't know, man. I don't know. चाइना के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी ना। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ। भारत में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई जर्नलिस्ट ये ओपनली कह रहे हैं कि G7 के बारे में ना हमें इतना सोचना भी नहीं चाहिए। ये बिना बात पे पॉलिटिक्स हो गई। एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इनके जो न्यूज़ आर्टिकल जो ये छापने वाले लोग हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया। और फिर भारत में भी दुख से मुझे बोलना पड़ेगा, कई लोगों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो, सरकार की आलोचना करना इंपॉर्टेंट है, मगर सड़कें टूट गई, schools की हालत. Wow, that's good that he said this, because I believe in this as well. And you see me, right? I'm an American citizen. I criticize my country and my government all the time. I think that's a very, very vital thing to do. But even here he says, that's why I say that I look at it, it is important to criticize the government. So he believes in doing that as well. That's good. That's good. We should hold our electorate accountable for anything that we disagree with. We are the constituency. They're merely a figurehead of what our political positions are. As a democratic society, we elect them. They need to do what we want, right? अगर सड़कें टूट गई, schools की हालत, वहां पे क्रिटिसिज्म सही रहता है। फॉरेन पॉलिसी लेवल पे एज ए कंट्री वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। देखकर दुख लगता है कई लोग पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। And that is a good thing as well to say that, as when it comes to like foreign policy, the country should stand united. 100%. You should be proud of your country, and you should be willing to help your country defend itself against those that would wish to do it harm, right? I don't know, man. Everything, it's a tricky slope. It's a tricky slope. It's a tricky route. It's a tricky mountain pass to navigate through, right? That's life, though. Life is just all about ups and downs and hardships and windfalls and man. We're going to continue the video. पॉलिसी लेवल पे एज ए कंट्री वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। देखकर दुख लगता है कई लोग पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे प्रोपेल कर रहे हैं। ये हामिद मीर जैसे लोग ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये देख पाओगे आप। मोदी की एम्बैरेसमेंट शुरू हुई है, तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहां पे अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसको मजीद जाना है। अब मजीद जाना है। हामिद मीर के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या लेवल है इस आदमी का। अरब नस्ल में कंफ्यूज कर लेता है ये। तो अगेन इंडिया में G7 को लेकर पॉलिटिक्स बड़े हाई लेवल की हो गई थी। बट वैसे आप अगर सोच कर देखो ना, G7 सच में अब एक इतिहास का एक रेलिक सा बन के रह गया है। G7 का कौन सा आखिरी निर्णय आपको याद आ रहा है जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ था? सभी
I don't really know. जो इकोनॉमीज है G7 की, ये नीचे की तरफ जा रही है. इनकी पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है. इनका भविष्य इतना कुछ है नहीं. फ्यूचर में सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा. और इसलिए भारत में भी आप देखोगे जो जर्नलिस्ट है वो कहते हैं इंडिया शुड फोकस मोर ऑन G20. G20 एक ज्यादा बड़ा ग्रुप है. Look at G20 here. Australia, Indonesia, Republic of Korea, aka South Korea, Japan, China, Russia, India, Saudi Arabia, South Africa, African Union, Argentina. Argentina is like in massive debt. Brazil, Mexico, USA, Canada, France, Germany, European Union, United Kingdom. I like how African Union excludes South Africa. Okay. Weird. Oh, I almost forgot Turkey. Everyone forgets Turkey. उसमें कई Also, no New Zealand. Rip New Zealand. No New Zealand on here. Also, rip Alaska and Hawaii. कंट्रीज हैं जो पोटेंशियली आगे जाकर इंपॉर्टेंट पावर्स बनेंगे और ऐसे देश भी हैं जिनकी एक काफी प्रैग्मेटिक सोच भी है. इवन ब्रिक्स भी आप अगर देखो, आप सोच कर देखिए, बहुत ज्यादा ओपन ग्रुप है. ब्रिक्स के मेंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं. G7 इतना क्लोज ग्रुप है कि आज तक इंडिया यहाँ पे मेंबर बना नहीं है परमानेंट. परहैप्स अब इंडिया बनना भी नहीं चाहता. तो अगेन G7 को लेकर ये न्यूज वगैरह खूब बन गई थी. इनवाइट you can't call it G7 if there's more than 7, even though many countries go to it. आया नहीं आया, मगर मेरे हिसाब से हमें G7 को आज के समय इतनी इंपॉर्टेंस अब देनी भी नहीं चाहिए. कुछ यहाँ पर ऐसा डिसीजन नहीं होने वाला जिससे ग्लोबली कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा. मुझे याद है जो बाइडेन के अंडर एक वो इन्होंने प्लान निकाला था, बिल्ड बैक टुगेदर वगैरह, कुछ नहीं हुआ उसका. बाइडेन के अंडर G7 की जो भी because it's Biden अनाउंसमेंट करी गई, कुछ उसका बड़ा इम्पैक्ट आज तक देखने को मिला ही नहीं है हमको. और इस बार भी आप देख लीजिए जिस तरीके से ट्रंप खुद के एलाइज को टारगेट कर रहे हैं कि जी मैं कनाडा को कब्जा लूंगा, कनाडा को बन जाना चाहिए यूएसए का पार्टनर. जब I mean, why not? Actually, it would be bad for Trump's voter base, the MAGA movement, to absorb Canada. If Canada became a part of the U.S., it would add a lot more left-leaning votes to the overall vote bank, the overall population, that a Republican would never win ever again. जापान से सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, यूरोप पर ये टैरिफ लगा रहे हैं. G7 में अब कोई यूनिटी भी बची नहीं है. सो रियली देखो, हमारे पीएम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट एज इंडियंस हमको भी ना वो कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ देना चाहिए. अब ये G7 इज नो मोर अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा. आइस ब्रेकर मिसाइल्स आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में. The icebreaker missile was developed by which country? Israel? I don't know. Let's find out. I'm sure it'll be here somewhere in the comments. Israel! It is Israel. Okay, hopefully he was right. PD10, everyone. PD10. Where is it at? Bam! Use code PD10 for a huge discount, guys. Maximum discount. Huge discount. Code PD10. Use it right now. Go and use it right now. We're going to read some of the comments, yeah? Our opposition party working for Pakistan here. Gabber, border. Traders are not only outside the border, but also inside the border. Pakistan propaganda. Congress propaganda. It means Congress is the best anchor of Pakistan. That's the reason why Congress is not coming into power till the next 10, 15 years. Do we think that's going to be the case after Modi? It's going to be Yogi UP. I forget his full name. I'm so sorry, guys. I'm terrible with names. When it comes to names, that is the worst thing that I'm at. Anti-Modi elements become anti-Indian knowingly, unknowingly. We should expose them.
I was shocked by S.J. Surel's statements. What brilliant person. Not only Pakistan media, but their child Bangladesh also covered the news that Modi was not invited. We have heard Odia here. We very rarely see Odia. The correct answer is Israel. Nice. Okay. India G7. Pakistan IMF is life. Pakistan propaganda equals Congress propaganda. Congress is the reason Pakistan even exists today. Arab nasal. Oh no. Oh no, not the Arab nasal. Mother India will shine. India BBC Hindi News also ran the same news that India was not invited to G7. Why does BBC show so much propaganda news? They're leftist. British-owned news channel. You guys gotta stop relying on these legacy media outlets. It's just they're so not good. Not good. There's better ways to get your news, right? I love your roasting skills. Be Russia. We saw some people say Israel. Some people said Russia. Icebreaker missile developed by Israel. Once a legend said the opposite of pro is con, so it means that opposite of progress is Congress. Wow, that's a good little pun. That's a good little pun. India best friend Snow Bear. Snow Bear. Is that Russia? The Russian Snow Bear. India should not attend this meeting. Why not? You can at least go there and talk to the people, right? It's a meeting of world leaders. I mean, it's easier to talk amongst themselves. I don't know. Propaganda, option C. That person said Francais. One information, so in new Bangladeshi note of 200 Taka, the map of Bangladesh is wrong. They have added some part of India, Bengal also. Please make a video on it. The new 200 Bangladesh note added a part of India. Maybe we can find that. So here's banknotenews.com. This is the 200 Taka note. Here is that, and interesting. So here is the depiction of Bangladesh on the notes. Brown, gold, and orange and green, a front Bengal and English text. Monument of standing woman, farmer, and man holding rifle at Dhaka University. Denomination registered, okay. Bengal and English text. Religious leaders of Islam, Buddhism, Christianity, and Hinduism standing in front of a mosque, temple, church, and pagoda. Denomination registered device. They have Islam, Buddhism, Christianity, and Hinduism side by side. That's interesting. That's interesting, but let's take a look at this note, yeah? Sure, you can see it right here. All right, I pulled up Bangladesh just so we can get a good idea. What have they changed here? Okay, so he said Bengal, WB. So maybe let's look at the top of the note. That seems pretty close. I mean, the scaling's a little off of this, but that's pretty close. That seems pretty accurate there. All right, let's check this side. It goes like this, yeah?
I think the scaling is just off, but I think the depiction is kind of close. Unless, let's see here, this goes up and then down. Unless they're saying it includes like this. No, because then that wouldn't work with this. I think it's just the scaling to get it to fit. They can't add like the details of the divots in and out. Like see how divoted it is, and like how like just this is crazy. Look at that. Like what what is this? Look at this. Look at this border right here. Bop bop. And then it goes back in right here. What is this border? That border's ridiculous, dude. Yeah, I think it's just because of the how small the note is, and like this the detail is like smudged. I don't think it looks like there was any intentional like expansionist propaganda on it. In fact, it actually looks like they lost territory on here because they don't have that little nub on the top of this right here. See how it kind of goes up and then it's just kind of flat. Up here it goes up. Hold on. Let's take a look. It goes up and then that way. Up. Yeah, so it's that would be that, right? Oh no, would that be that? It's just like it's so deformed. I don't know if anything's intentional. Maybe. Maybe it looks like they added a little bit more here. But again, it's like it's so distorted, it's hard to even tell. I don't know. I don't know. Interesting, though. Interesting. Guys, a link to the video will be in the description down below. Please go and check it out, yeah? Go and check it out. PD10, everyone. Thank you for watching. Catch you on the next one. Take care. Goodbye.